Assalamualaikum grade 9. How are you? Faiza Nadeem is here with your English lesson. And here I am standing, wishing, praying and hoping that all of you are fine, healthy, wealthy, safe and wise and going to school regularly and attending your classes regularly. I hope that all of you are obedient and are conscious about your salah. So, what we are going to do today? Today, I've brought a very interesting topic. I say interesting, I know it's interesting, but this is how I have learned the spelling. So, I have brought a very interesting topic for you. Let's find it out. Ji bachcha, what is the board telling you? The board is telling you that we are going to read about media and the impact of media. And this is the third unit of your textbook, which starts from page number 21 and ends at page number 31. Alright? First thing first. सबसे पहले हम करेंगे translation. क्यों? क्योंकि आपका हर पैराग्राफ, हर यूनिट का एग्जाम में आ सकता है. ठीक है? Examiner, the paper maker can give any paragraph from any unit of your textbook. That specific question of translation is carrying 8 marks and each paragraph is carrying 4 marks. But you have a choice. A choice is such that you have to attempt any 2 out of the 3 given paragraphs in your paper. So be ready, be on your toes, be vigilant. कभी कभी एक ही टॉपिक में से 2 पैराग्राफ्स भी आ जाते हैं, तो एक चैप्टर छोड़ के ये ना समझना कि हमने छोड़ दिया तो हम सेफ हो गए. ठीक है? हर लफ्ज की जो आपकी टेक्स्ट बुक में यूनिट के अंदर मौजूद है, आपने ट्रांसलेशन करनी है और आपको ट्रांसलेशन आनी चाहिए. तो वो 8 नंबर जो बड़े इसेंशियल नंबर्स हैं, उनको हासिल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम वोकैबुलरी मीनिंग्स करते हैं जो आपके बोर्ड पे मौजूद हैं. ये मीनिंग्स हर मुश्किल वर्ड की जो आपकी कॉम्प्रिहेंशन में मौजूद है, मैंने करके लिख के देती हैं. आपका काम बेटा ये है कि आप इनको नोट डाउन करें. ठीक है? नोट डाउन करके जब लेक्चर एंड हो जाता है तो दिस इज योर होमवर्क to basically translate each and every paragraph of this specific unit. अब ये unit general unit नहीं है, ठीक है? General common unit नहीं है. ये unit comprise कर रहा है dialogues पे, ठीक है? ये unit तकरीबन मुकम्मल का मुकम्मल dialogue writing है. पहले मैं आपके साथ translation करती हूँ क्योंकि ये essential है, और फिर जब ट्रांसलेशन ख़त्म हो जाएगी तो ग्लॉसरी शुरू करने से पहले मैं आपको इस यूनिट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगी. राइट? सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वर्ड्स एंड देयर ट्रांसलेशंस. फेवरेट पसंदीदा, एंग्शियसली बेचैनी से, पोलाइटली शाइस्तगी या नरमी से, कंक्लूड नतीजा निकालना, अर्लियर पहले का या इब्तदा, डिस्कशन मुबाहिसा, अक्यूज इल्ज़ाम लगाना, फॉल्स झूठ, एड इजाफा करना, श्योरली यकीनी तौर पर, इनहैबिट रहना, एक्सप्रेस इजहार करना, ऑडियंस सामईन, इंटेग्रल लाजमी या नागुज़ीर, इम्पैक्ट असर, करेक्टिव इस्लाही, पॉजिटिव मस्बत, कवरेज अहाता करना, रॉन्ग गलत, ग्रीट सलाम करना, अवेयरनेस आगही, करप्शन बदउद्वानी, टेररिज्म दहशतगर्दी, एडिक्शन आदत, वायलेशन खिलाफ वर्जी, अकाउंटेबल जवाबदेह. I was reading these words and their translations and I was hoping that since I've given you the page number, since I've told you the chapter number, you have been underlining the words and writing their translations on the top of it. ठीक है? मैं चाहती हूँ नेक्स्ट बोर्ड पे जहाँ मैं इसको कंप्लीट करूँगी, आपने मुझे इधर पॉज करके दोबारा कॉपी पेस्ट कर लेना है, देख लेना है कि कोई लफ्ज मिस ना हो.
बेटा याद रखो ये बहुत इसेंशियल 8 मार्क्स हैं और इनको हम लूज नहीं करना चाहते। तो हर पैराग्राफ की ट्रांसलेशन अपनी ट्रांसलेशन वाली कॉपी में लाजमी करनी है, ठीक है। तो चलो अब हम ट्रांसलेशन कंप्लीट करते हैं। विजिलेंट चौकन्ना, कम्युनिकेट इबलाग, मोड जरिया अट्रैक्ट तवज्जो मबजूल कराना, ग्लोबल आलमगीर, एंटरटेन तफरीह देना, डाउट शक, पार्टिसिपेट हिस्सा, ठीक है। विद दिस आई हैव कंप्लीटेड ऑल द डिफिकल्ट वर्ड्स फ्रॉम दिस स्पेसिफिक यूनिट। लेट मी ब्रीफ यू अबाउट द यूनिट फर्स्ट बिफोर आई मूव ऑन टू द ग्लॉसरी। दिस यूनिट इज अबाउट अ क्लासरूम, ठीक है। एक क्लासरूम का एम्बियंस उन्होंने डिस्क्राइब किया है। इस एम्बियंस में क्या है, इस एम्बियंस में टीचर्स हैं और आपके स्टूडेंट्स हैं, और टीचर्स का वो आपकी इंग्लिश टीचर का वो स्पेसिफिक एक डिस्कशन डे है, और उस डिस्कशन डे में द टॉपिक ऑफ द डिस्कशन इज मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। एंड द स्टूडेंट्स सिंस दे आर वेल इन्फॉर्म्ड, सिंस दे हैव डन देयर होमवर्क, आपकी तरह नहीं थे, सबने काम किया हुआ था, उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी सर्च, अपनी रिसर्च टीचर्स के साथ शेयर की, ठीक है। उन्होंने ये डेयर किया, ये डिस्कस किया कि मीडिया का इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है ओवर द पीपल, ओवर द masses एंड द क्लासेस। अब मीडिया इज नॉट योर कंप्यूटर्स, यूट्यूब, ट्विटर, व्हाट्सएप, नो, मीडिया इज नॉट दैट। मीडिया comprises of 3 different parts। सबसे पहले आपका प्रिंट मीडिया, उसमें आपके आते हैं न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स, ठीक है। सेकंड आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसमें आता है आपका टीवी और रेडियो, और थर्ड आपका आता है सोशल मीडिया, उसमें आपके इंटरनेट रिलेटेड जितने भी वेबसाइट्स हैं, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितनी भी ऑप्शंस हैं, वो सब आती हैं, ठीक है। सो वी आर जनरली स्पीकिंग अबाउट ऑल द 3 मीडियाज एंड वी आर थिंकिंग एंड वी आर लर्निंग how they can make or change the world, ठीक है। They have a very strong impact, and with this concept of everything just a click away, the world has turned into a global village. There are multiple times when I tell you, beta, that you are not in competition with your class only or your school. You are in competition globally, around everywhere in the world, because the media has brought us closer, very close, very, very, very close, ठीक है। We know what's happening in the farthest part of the globe just through one click, ठीक है। We know what is happening either in Antarctica, even if we would never dream of going over there, ठीक है। हमें अगर वहाँ इंटरनेट मौजूद है तो वहाँ की हर चीज़ लाइव स्ट्रीम हो जाती है, ठीक है। तो मीडिया इज now become a very essential part of the world of the human beings, ठीक है। ये इस पूरे पैराग्राफ का एसेंस है। नेक्स्ट मैं आपको इस पैराग्राफ को या इस पूरे यूनिट को समराइज करूंगी जब मैं इसकी समरी करूंगी। अब हम आते हैं ग्लॉसरी पे। ग्लॉसरी क्यों इम्पॉर्टेंट है? ग्लॉसरी इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ग्लॉसरी के वर्ड्स में से आपके सेंटेंसेस भी आ सकते हैं और आपके ऑब्जेक्टिव्स भी आ सकते हैं। किसी चीज़ को हमने ओवरलुक नहीं करना। इंग्लिश पेपर का जो पहला पार्ट होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव, और वो ग्लॉसरी में से ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं, ठीक है। हमने ग्लॉसरी के इन ऑब्जेक्टिव्स को छोड़ना नहीं है, लूज नहीं करना। दूसरे ये कि आपके 5 मार्क्स का सेंटेंसेस का क्वेश्चन आता है और वो वर्ड्स कहीं से भी आ सकते हैं, आपकी ग्लॉसरी में से भी आ सकते हैं। सो बी वेरी वेरी विजिलेंट, वेरी वेरी प्रिपेयर्ड। आई हैव रिटन द ग्लॉसरी ऑन द बोर्ड howsoever is present in your book. Why I have written it? Because I am going to give you the meaning and construct sentences of both the words and the meanings, right? You must keep your pencils in your hand, your notebook very nearby, and copy down the sentences that I am giving you in order to have a good, healthy, heavy sentence bank. और जब आप सुन लेंगे और सुन के लिख लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो आपका प्रोसेसर है ये ठक काम करेगा और आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं ग्लॉसरी वर्ड्स की तरफ। ग्लॉसरी वर्ड का पहला वर्ड है इम्पैक्ट, इफेक्ट। द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन द वर्ल्ड हैज बिकम सो डीप रूटेड दैट वी कैन नॉट नाउ लिव विदाउट इट। इफेक्ट, द साइड इफेक्ट ऑफ दिस मेडिसिन इज हेडेक और नोजिया, ठीक है।
integral and essential. Internet has become a very integral part of our life. Now we cannot dream of living without internet. Essential. Morning walk is essential for a healthy lifestyle, right? Eager and keen desire. He is eager to have the best grades in the final exam. Keen desire. I have a keen desire to have a journey around the world, right? Entertain and amuse. Multiple television channels have been on air to entertain ourselves or to entertain us. ठीक है? Amuse. I was seriously amused to see the elephant standing on the stool in the circus. Geared up or ready. I am all geared up for the expedition. I am ready for the exams. Right? So I've constructed all the sentences from the vocabulary and their meanings. We don't want to lose any mark. ठीक है? कोई भी mark lose नहीं करना है. इसलिए हर काम किया है. कुछ भी नहीं छोड़ा है. Next is your vocabulary. आपकी यूनिट के एंड में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो डिफरेंट सब हेडिंग्स में डिवाइडेड है और पहली सब हेडिंग जो है वो वोकैबुलरी की है, मैंने पिकअप की है. उसका क्वेश्चन नंबर ए आपसे कहता है कि ये जो फ्रेजेस हैं आपने इन फ्रेजेस को डिस्क्राइब करना है कि ये बुक में किस नेचर में या किस तरह से इस्तेमाल हुए हुए हैं. यू हैव टू गिव द मीनिंग ऑफ हाउ दे हैव बीन यूज्ड in the text. ठीक है? What I will do, I will not only give you the meanings, but I'll construct the sentences for you as well. Right? So the first word is geared up and ready. I am all geared up for the expedition. I am all geared up for the hiking. I am all geared up for the next adventure. I am all geared up and ready to go for the next adventure of my life. ठीक है? Global village. People have come closer to each other. The world has turned into a global village thanks to internet. Internet has turned this world into a global village, and everything that we seek, desire or want is just a click away. A click away. I've already given you the sentence of a click away, ठीक है? Everything that we wish, demand or dream of is just a click away thanks to internet. Constructive role. A good teacher plays a very constructive role in the lives of all her students, ठीक है? Internet can play a constructive role in the lives of the people if it's used honestly. Raise awareness to make people conscious. I have arranged a walk to raise awareness about the problems that are caused by poverty. ठीक है? We have been protesting or we have been attending a procession that was arranged to raise awareness about the increasing rate of cancer due to eating a lot of pan masalas. ठीक है? To keep an eye watch. When my mom was out, she asked me to keep an eye on my younger sibling. I was designed or I was asked to keep an eye on my younger brother while mom was out shopping. ठीक है? And a better one. Pakistan Army keeps an eye on the activities of all the neighboring countries to keep us and Pakistan safe. Right? One phrase is left. Let's quickly complete those and then we'll move on to the B part of the vocabulary. A mouthpiece of downtrodden. If you will read the comprehension, if you will read Unit 3 and if is incorrect to be used over here, you must read the comprehension. Then you will realize that in the last lines, one of the students says that downtrodden, media has become a mouthpiece for the downtrodden. Downtrodden कौन से लोग होते हैं? वो जो गरीब गुरबा होते हैं, जिनकी कोई नहीं सुनता. If you are rich, you have access to all the best people around the country. If you are rich, you have an access to the people who can hear you. But if you are poor and you do not have contacts, then people don't listen to you. And media is the only platform through which they can express what they are suffering from, what they have been missing or what they have been losing in their lives. ठीक है? So, a mouthpiece of downtrodden, representative of the depressed people. ठीक है? Media has become
a mouthpiece of the downtrodden. And we can write or specify which media, not the print, neither the electronic, it's the social media. Because with the access of very cheap internet, everybody can use it, everybody can make accounts, there is no discrimination of rich or poor, or not a lot of amount of money is required. So the social media has become a mouthpiece of downtrodden, where they can share their problems and their losses, right? Now we come to the second exercise, exercise B, and this exercise B asks you to identify and place these words. There are multiple words written in this exercise, and under those words is a column, and that not a column are 3 columns, and each column is labeled as noun, adjective and adverb respectively. You have to identify the word and then place it in its respective column. I've not made the columns, howsoever what I have done is I have written the word, ठीक है, and I'll tell you the nature of the word, कि ये word की क्या nature है, ये noun है, adjective है या adverb है. आप उसको उसके रिस्पेक्टिव कॉलम में पुट अप कर दीजिए. ये वर्ड साथ साथ आपको उसकी नेचर डिस्क्राइब करूंगी, साथ साथ मैं आपको उसका सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करके दूंगी. सेंटेंस कंस्ट्रक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई आई एम पेइंग सो मच एम्फेसाइज ऑन इट. ठीक है, आपको भी इतना ही स्ट्रेस देना है इसके ऊपर. मीडिया, मीडिया इज अ नाउन. ठीक है, ये नाउन डिस्क्राइब करता है वो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन को थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट टू ईच अदर देन टॉकिंग. ठीक है, अब मैं भी तो इस वक्त आपसे सोशल मीडिया के थ्रू ही कम्युनिकेट कर रही हूँ ना. मैं आपको टच कर रही हूँ, मैं आपकी लाइफ टच कर रही हूँ, मैं आपको कोई इम्प्रेस दे रही हूँ, कोई इम्प्रेशन दे रही हूँ, ये मैं सोशल मीडिया के थ्रू ही कर रही हूँ ना. तो दिस इज अ नाउन. ठीक है, दिस मीडिया इज अ नाउन. ऑडियंस, ऑडियंस क्या है? अ ग्रुप ऑफ पीपल. ठीक है, सो ऑडियंस इज ऑल्सो अ नाउन. मीन्स, मीन्स रास्ते, बट दीज रास्ते आर अ नाउन. ठीक है, ये जो रास्ते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, सवारियों के रास्ते या सवारियों के जरिए. ठीक है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, वो रास्ते थ्रू विच यू कैन कम्युनिकेट. इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लेकिन ये नाउन है. ठीक है, नेक्स्ट आता है ईगरली. ईगर जहां ly हो वो सारे आपके एडवर्ब्स होते हैं. ठीक है, ly के वर्ड यूजुअली आपके सारे एडवर्ब्स होते हैं, लेकिन सारे ly एडवर्ब्स नहीं होते, बहुत सारे एडवर्ब्स डिफरेंट वर्ड्स भी होते हैं. ठीक है, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज अ नाउन बिकॉज इसके जरिए मैं आपसे बातें कर रही हूँ लाउडली. अभी अभी मैंने आपको कहा है कि ly होंगे तो वो मोस्टली सारे एडवर्ब्स होंगे. ग्लोबल, ग्लोबल आपका एडजेक्टिव है. ग्लोबल विलेज. ठीक है, तो ग्लोबल कैसा है? पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो एडजेक्टिव है. करेक्टिव वेज, करेक्टिव भी आपका एडजेक्टिव है. ठीक है, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इज ऑल द नॉलेज दैट यू कैन गेट. इट्स अ नाउन. इम्पैक्ट, असर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. कंस्ट्रक्टिव, एडजेक्टिव. ठीक है, कंस्ट्रक्टिव वे, कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट, एंड फॉल्स इज ऑल्सो ए adjective. False news. All right, so these are all the words and their respective natures to be put in their respective columns in your textbook. ठीक है, आपने इनको फौरन अपनी टेक्स्ट बुक के रिस्पेक्टिव कॉलम्स में प्लेस कर देना है. Media, electronic media has provided millions and zillions of people not only with information but with entertainment as well. Communication. Social media has made it easy for us to communicate all over the world. Social media is the only mode of communication which can happen globally, loudly.
He shouted loudly for help. The audience applauded at the best performance of the stage actor. Global. The world has turned into a global village through social media, internet, corrective. Media can play a corrective role for the society if used properly. The means of communication has extended due to the excessive use of internet. Information. A lot of information is given daily through all the modes of media, from electronic to print to social. Impact. The impact of the current news was such that people has decided to protest against the new rule. I was eagerly waiting for my birthday to come. Constructive. We must play a constructive role by being helpful to everybody around us. Constructive role to the society. False. The false news created a ripple among the masses and they were all disturbed after hearing it. ठीक है, अब आ जाए समरी पे. आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो पहला क्वेश्चन है वो आपको ये कह रहा है कि उधर उन्होंने एक मैप बनाया हुआ है और उस मैप के अकॉर्डिंग आपने इस पूरे यूनिट की, इस पूरे कॉम्प्रिहेंशन की समरी लिखनी है. ठीक है, उसमें एक बड़ा सारा गोल दिया हुआ है, सर्कल बनाया हुआ है, उस सर्कल के अंदर आपके यूनिट का नाम लिखा हुआ है और आपको डिफरेंट एरियाज दिए हुए हैं इस यूनिट की समरी लिखने के लिए. मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको पैराग्राफिंग में समरी करा रही हूँ. मैंने पैराग्राफ का जो टॉपिक सेंटेंस है वो लिख दिया है. टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, अगर आपको पैराग्राफ वाला लेक्चर याद हो तो मैंने आपको समझाया है कि हर पैराग्राफ सिर्फ एक चीज़ के बारे में बात करता है. ठीक है, तो हम टॉपिक सेंटेंस पहले लिखते हैं और फिर उसके बाद हम उस पैराग्राफ को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करते हैं. तो इस पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस पैराग्राफ 1 का है कि मीडिया इज़ द मोस्ट पावरफुल मोड ऑफ कम्युनिकेशन. And after this, you can describe that media is the only mode of communication through which the sharing of news and information takes place. Sometimes media works negatively and accuse people by giving the false news. On the other hand, the realities of life are also expressed, portrayed or discussed through the social media. Moreover, ये ज़रूर लगाइएगा moreover furthermore ताकि आपकी क्रिएटिव राइटिंग को एक बहुत खूबसूरत सा इफेक्ट मिले. ठीक है, मोर ओवर मीडिया हेल्प्स टू शेयर नॉलेज. इट गिव्स द नॉलेज टू द इनहैबिटेंट्स ऑफ वन स्पेसिफिक एरिया एंड thus we get to know about the first hand information of things that are happening around us. Media is the only mode of communication through which we can express our feelings and we can express our opinions and share them with people around us. ठीक है, this is your paragraph 1. Let's move on to paragraph 2. The topic sentence for paragraph 2. Media has become a part of our life. ठीक है, media has become a part of our life. Electronic and print medias are not only providing us with information, they are giving you entertainment as well. They have been accessing every event that is happening or taking over all over the world. Electronic, print and then social media as well has given you the live coverage of everything that is happening all around the world. Along with that, the world has become a global village. Everything is just a click away. You can know about all the major events by clicking on to the specific website, and this has given an easy access to every person all over the world who can tune in and click on to get to know about the current information, whatever is happening in the world globally about the current affairs. With this, you will end your paragraph 2. We'll move on to paragraph 3. Paragraph 3 speaks about the constructive role for the society. Paragraph 3 says that media has played a very constructive role for the society. And in this paragraph, you can write about what information the media has given. It has raised awareness and it has discussed the social issues and it has told you about the corruption, terrorism, poverty,
ठीक है, everything that happens around us is being displayed either on the print or on the electronic or on the social media. Furthermore, downtrodden people have found a place to share their problems, to share their discomfort. ठीक है, and in conclusion, you can write that media can play a positive role and has a corrective path if worked honestly. ठीक है, with this, I'll recapitulate today's lesson. We started Unit 3 of our textbook, Media and its Impact. We did word translation, we did the vocabulary, and we did the summary of this specific unit. And we made or constructed millions and zillions of sentences. ठीक है, I hope you have noted it down. I hope that you have written the sentences with me and you are going to do the translation of all the paragraphs of this specific unit. Meanwhile, अपना ख्याल रखो, हंसते रहो, खेलते रहो, पढ़ते रहो, obedient रहो, तमीज़ वाले रहो. ठीक है? Inshallah, we'll meet in the next lecture. By that time, Allah Hafiz.